Assalamu alaikum. First morning in Zurich, starting with a breakfast. So woke up, just come down, had a shower, come down, starting with the breakfast with a fresh orange juice and different fruits, and the rest of them is going to be plenty of. If we can show you all this side is the food area. The people are sitting around here. Lovely pineapple. इसलिए ट्रेन स्टेशन पर पहुँचे हैं लोकल ट्रेन स्टेशन होटल तो बाहर वेट कर रही हैं ट्रेन सिटी सेंटर ही जासा ज़ूरिक प्लान थोड़ा चेंज हो गया इतना भी जिस इंग्लैंड की बैंक हॉलीडे आ इतना भी कोई ना कोई रिलीजियस हॉलीडे आ चलो जी ट्रेन नीचे लथे हैं पहले आए हैं होटल तो ज़ूरिक ट्रेन स्टेशन पर तो ज़ूरिक ट्रेन स्टेशन पर ले तो लोने पे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर जो तो सारी इंफॉर्मेशन लभसी ये सामने नज़र अचनी पे इंफॉर्मेशन सेंटर इसने जाने हूँ दोस्त दो खलते हुए नाल ही बाद टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर इतों सारी इंफॉर्मेशन किन्ने उस तो बाद आज ना बाकायदा प्रोग्राम शुरू हो जासी जी आज किस तरह आप गुजारना है ट्रेन स्टेशन को पहुंचे हैं जी हूँ अगली पहली सारी डेस्टिनेशन प्रॉपर ट्रिप स्टार्ट हो सी राइन फॉल्स चाहिए जेडे तकरीबन 50 मिनट लगी जाती फिर उठा जाई वाटरफॉल दियाँ बोट पर बैसा तो बाकी और का नज़ारा ना दसा या ट्रेन में जा रहा सा रास्ते ने कुछ खूबसूरत मनाजर मैं क्या तुसा नाल भी शेयर करी कि ना है तब कुछ कितने दिलकश मनाजर है हाँ जी पहुँचे हैं जी फर्स्ट जी एक्चुअल साड़ी डेस्टिनेशन सी वो है राइन फॉल्स ज़ूरिक तो तकरीबन 50 मिनट लगे हूँ तो इसना मैं अपरू टप अपरू इसना नज़ारा कराना है बड़ा खूबसूरत नज़ारा जी पानी भी सो कितना साफ और शफाफ तो बोटा डिफरेंट कलर नहीं आई हूँ मैं अपने कैमरे ना रुख रख सही नज़ारे वाले पासा करसा बड़ा फेस तक ही बोर हो गई सो चलो हूँ सही इसना नज़ारा कराने While you're watching the beautiful scenery here, I'll tell you some facts about this tourist attraction. This is 50 miles from Zurich main station. It is located in the north of Switzerland near German border. The Rhine Waterfall is the biggest waterfall in Europe. Its width is 150 meter and depth is 23 meter. In summer 600,000 cubic liter water flows in a second. And in winter obviously it doesn't be that much because the water is not melting from the glaciers. It's 250,000 liter per second. If you are visiting Switzerland, this is one of the places you must visit. It's really beautiful. You can see in this in the camera as well. Look at the watercolor, how beautiful it is. My friends are taking pictures. Look at beautiful location, beautiful weather. This is a nice, very beautiful view from here. You can see amazing pictures, amazing view from here. These boats which you can see there, they are different colored boats and they got different routes. The more you pay, the nearest the boat will take you. We got the blue boat and which will take us nearer, and that's for only 15 minutes, and we paid 5 franc to Swiss franc to go near the water this point, and then extra 8 francs to go on the boat and for 15 minutes. And if you are enjoying my video, don't forget to like, subscribe and comment on my video. Look at the waterfall, really powerful, quite noisy, and the wind it's quite windy as well. Beautiful, amazing. Let me just zoom in a little bit. This is the other side. This is the north side of this lake, this waterfall. After going near the waterfall, we are gonna go on the other side and spend some time there as well. That's the rock or cliff in the middle. The waterfall goes from the both side of this place, and this was extra charges if you want to go there.
or go on the rock for 10-15 minutes. But we decided to just go nearby the waterfall, and then we're gonna go on that side, what you can see in my camera, and have a rest a little bit and have a food there. What a beautiful view again. And let you know, this Rhine Fall is located in Schaffhausen town, north of Switzerland, and this should be must visit location if you are visiting Switzerland in the near future or in the future. Now let's enjoy the rest of the video. साहब क्या बात है कि हाजी साहब लगे आपने भाई साहब अरे क्या बेटा कौन सा देखो we are almost underneath the waterfall. What a beautiful view. Fantastic. You know, my friend Amjad is saying that paise pure hoenge on your trip. Look at that. Just underneath the waterfall. Everybody is making their videos, selfies. Beautiful view. I hope you are enjoying it. And if you are enjoying it, don't forget to like and subscribe my channel. And inshallah in coming days there will be many more videos uploaded. Look at that, the water is drizzling on myself and everybody. So it might be coming in the way. Look at that. Look at that. Look at that. बिल्कुल पानी के नीचे आ गए जी. मल्टी लैंग्वेज में कर रहा हूँ वीडियो ये, क्योंकि कुछ इंग्लिश स्पीकिंग व्यूज़ हैं, कुछ मिलिट्री मोस्टली मिलिट्री हैं और कुछ उर्दू स्पीकिंग है. वो देख लें, वो बोट पिंक कलर वाली बिल्कुल वो इधर पास आती है, वाटरफॉल के अंदर आ जाती है. पानी ऊपर आ रहा है, पानी के कतरे, तो अब शाख के कतरे बोट हम पे आ रहा है और बड़े मौसम ज़बरदस्त है. इतने खूबसूरत मौसम है, इतना खूबसूरत नज़ारा. ये देख लें पानी का बहाव, इसका करंट बहुत तेज़ है. Well worth it coming here. It was expensive, but it's really worth it coming here. And especially if the weather is nice, as you can see in my surrounding. Look at that. I'm going to take you all the way around to this beautiful location. What a fantastic view. Look at that. My friend here enjoying chilling. Likes to come in the front of the camera. Look at the Sergeant Mubir Saab, and he's got somebody else there to take his pictures. Look at that, beautiful, beautiful. ये देखिए जी खूबसूरत नज़ारा आपको राइन वाटरफॉल जो ज़ूरिक से तकरीबन 50 मिनट के डिस्टेंस पे है. बहुत ही खूबसूरत नज़ारा. वेल वर्थ इधर आना. और इसके हमारे पीछे का पानी का बहाव बहुत तेज़ है, फ्रंट बहुत तेज़ है. अगर मैं आपको वाटरफॉल की तरफ ले जाऊँ, इस तरफ बोट्स आ रही हैं, डिफरेंट कलर की बोट है, डिफरेंट पे मिजा. अगर मैं अपने कैमरा मैन से कहूँ कि अगर उसकी तरफ ले जाए, बोट लगाएंगे. ये बोट है, ये 15 मिनट्स के लिए आती है. इसकी रेड कलर की है, येलो कलर की है. इनकी डिफरेंट पेज है और डिस्टेंस पे वाटरफॉल के पास ले आते हैं. उम्मीद है आप सब इसको पसंद कर रहे हो. अगर पसंद कर रहे हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिए. तो मैं याद रखिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ. देखो जी सत्रह आए पानी वाटरफॉल तकने में बड़ा जबरदस्त आ रहा है. सारे आपने कहेंगे कि क्या करने जा रहे हैं, क्या हो जाए. अच्छा नीचे ना व्यू तक ही तो हूँ प्रोग्राम है. इसने ऊपर जाने ना चेयर लिफ्ट जी है, चेयर लिफ्ट नहीं है,
सिर्फ लिफ्ट है ये उपर असें खड़सी फिर ऑल द वे अराउंड वॉक करी तो दूसरी डायरेक्शन जाई उसने बोट कैच करने की कोशिश कर सा चलो जी ऑन टाइम हो गया असां बोटा बनिया रेड बोटा बेसा ये बोट असें क्रॉस कराची इसलिए कि असां ब्लू बोट पे गया ये बोट असां की खड़सी वाटरफॉल कोल साजे साथ माशाल्लाह जुल्ला उधर वो पीछे तकी सकने हो वाटरफॉल है साढ़े पीछे उधर सारे बस अभी कोने पर बहना चाहिए तो अस बोट कैच की जी रेड बोट इस असें क्रॉस द रोड क्रॉस द रिवर किया उस तो बाद अस उतों बोट चेंज की ब्लू बोट बिल्कुल कितना ज़बरदस्त नज़ारा है पानी ने फ्रेश की आवाज़ है वो भी आई पानी ये बंदे इतने कोल गए हैं कि बनाई भी ना ज़बरदस्त नज़ारा है बिल्कुल पानी ने करीब आई गया जी देखो सारे पीछे सारे बिल्कुल पानी जी बिल्कुल करीब आ गया पानी ने कलर तक ही तुम अंदाजा हो सके कितना साफ सुथरा ग्लेशियर ना वाटर है all my YouTube viewers, I hope you are enjoying this video. Look how beautiful the scenery is. One of the beautiful places in the world. The water, as you can see, the color of the water. The green and tall trees. And the waterfall again. That waterfall. Sir, नाल अमजद मीर साहब ये गोश्त खाने ने बड़े शौकीन है भाई मच्छी ने गोश्त हुआ या लैम हुआ या चिकन हुआ तो ये बस छाल मारने वाले हूँ पानी च तो मैं वीडियो बंद करना ये ना इस तो पहले कि मैं ये छाल मारी तो मच्छी ने शिकार ने पीछा निकली जाए राइन फॉल पहुँचे हैं जी इतना गया पीछा बोट ने ट्रिप करी तो इस जगह पर आए पार रिवर की क्रॉस किया तो एक्सपेक्ट ना करने इतना भी हलाल फूड मिली गया इतना देखो लोग अपने मुस्लिम कम्युनिटी में बैठे हुए मैंगो लस्सी अगर पीछे साइन नज़र अचना हुआ है और वैसे नूडल्स समोसास चिकन बिरयानी एवरीथिंग भाईजान फूड हलाल है
Halal? Halal. Assalamu alaikum. Back again after rain water fall. Now we are back to the Zurich city center. Came to the main train station, and after that we come to the center where we're gonna catch a local boat, and it's gonna take us on the lake. So I just want to show you the view of this center part of Zurich. Right now we are on top of the bridge, and the river or the lake is underneath. Quite busy. It's a holiday here, and during the day it wasn't that busy, but now it's near around 6 o'clock, and you can see it's quite lively. And one more angle, and we are going to catch, hopefully it's gonna be this ferry. Maybe let me just zoom in a little bit for you. And that's gonna be the first day, and ending like this. Maybe after here, when we finish, we're gonna go for a meal. So we're gonna try to find a halal food place. I have heard there are quite a lot of halal places here somewhere in the city. So I hope you are enjoying my video. The weather is lovely, as you can see in the video. The sun is shining, the sky is blue. Zurich lake पर इसलिए फेरी पर बैठ गया. फेरी स्टार्ट है, 1.5 घंटे का ट्रिप है. मैं क्या चलो स्टार्ट होने फर्दर डाउन जाने से पहले कि इसने सारा अराउंड 360 एंगल इक्वल दस यूरो फिर आसा आप इंजॉय कर सकते ताकि इसका सारा एंगल. पीछे जो कि जिस तरह से ये ज़ूरिक है, ज़ूरिक सिटी. इसने दसनाया अगेन दूसरे एंगल. आई होप से इंजॉय करने सो वीडियो भी क्लियर हो सी. साहिब